Honorable President of India, Smt Droupadi Murmu, Chairman, Central Board of Direct Taxes, Shri Ravi Agarwal, Member Admin, Central Board of Direct Taxes, Shri Prabodh Seth, Principal Director General of Income Tax Training, Shri Sanjay Bahadur, Director General of National Academy of Direct Taxes, Shri P. Selva Ganesh, other dignitaries and colleagues, a very good morning to one and all. It is a day of immense pride of the officer trainees of the 78th batch of Indian Revenue Service Income Tax to call on the Honorable President of India. I, Divya Badse, consider it my highest honor and privilege to welcome everyone gathered here. May I now request Shri Ravi Agarwal, Chairman, Central Board of Direct Taxes, to deliver the welcome speech. भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय राजस्व सेवा के 78वें बैच के प्रशिक्षणार्थी अधिकारी, रॉयल भूटान सेवा के प्रशिक्षणार्थी अधिकारी और मेरे प्रिय सहकर्मियों, आपके समक्ष भारतीय राजस्व सेवा के 78वें बैच को प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रतिभाशाली युवा अधिकारियों का यह समूह जल्द ही भारत के कर प्रशासन की जिम्मेदारी संभालेगा। राष्ट्रपति महोदया, आपकी आज की उपस्थिति इन अधिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। इस बैच में 142 शिक्षणार्थी अधिकारी हैं। साथ ही रॉयल भूटान सेवा के 2 अधिकारी भी शामिल हैं, जिससे कुल संख्या 144 हो जाती है। इस बैच की औसत आयु 27 वर्ष है और सबसे युवा अधिकारी की आयु केवल 22 वर्ष है। बैच में 40% महिला अधिकारी हैं। इन युवा अधिकारियों में से प्रत्येक विविध पृष्ठभूमि से आता है, जो अपने साथ विशिष्ट दृष्टिकोण और कौशल लाते हुए विभाग को समृद्ध करेगा। राष्ट्रपति महोदया, आयकर विभाग की प्राथमिकता विश्वास आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल तकनीक की सहायता से प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर है, ताकि कराधान अधिक सुगम और प्रभावी हो। इसी उद्देश्य से आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा की गई है। आपकी स्वीकृति के साथ नया आयकर विधेयक संसद में विचाराधीन है। इस नई वैचारिक सोच के अनुरूप हमारे भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों का प्रारंभिक प्रशिक्षण क्षमता आधारित मॉडल पर तैयार किया गया है, जो 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। पहला, ज्ञान क्षेत्र क्षमताएं, दूसरा कार्यात्मक क्षमताएं और तीसरा व्यवहारिक क्षमताएं। इस प्रशिक्षण के मूल में प्रूडेंट अर्थात विवेकपूर्ण दृष्टिकोण है, जो आधुनिक कर प्रशासन के मार्गदर्शक सिद्धांतों को परिभाषित करता है। इस दृष्टिकोण के 7 अंग शामिल हैं। पहला, पी प्रोफेशनलिज्म अर्थात व्यावसायिकता, आर रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस अर्थात उत्तरदायी और जवाबदेह शासन, यू अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस अर्थात जटिल व्यावसायिक लेन देन को समझना, डी ड्यू डिलिजेंस अर्थात उचित परिश्रम, ई एम्पैथी अर्थात सहानुभूति, एन नॉन इंट्रूसिव अप्रोच अर्थात गैर हस्तक्षेप दृष्टिकोण और अंत में टी टेक्नोलॉजी ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात प्रौद्योगिकी संचालित प्रशासन। राष्ट्रपति महोदया, आज हम आपके समक्ष जिन अधिकारियों को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो इस विभाग के भविष्य हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हैं और सार्वजनिक सेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय राष्ट्रपति महोदया, मैं ध्रुव सप्रा, भारतीय राजस्व सेवा के 78वें बैच का प्रशिक्षु अधिकारी, हमारे प्रशिक्षण अनुभव की संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये हमारे लिए एक ऐसा अवसर रहा जिसने हमें केवल आयकर कानूनों की सैद्धांतिक समझ ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से भी सशक्त बनाया। हमारे प्रशिक्षण में अनुभवात्मक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया। सैलरी प्रीमियर लीग जैसी अभिनव पहल के माध्यम से हमने आयकर को न केवल समझा, बल्कि इसके वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में लागू करना भी सीखा। इसी तरह
पीयर लर्निंग पद्धति के माध्यम से हमने आपसी विचार विमर्श और सहयोग से जटिल कर संहिताओं को सरल बनाने की कला भी सीखी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी हमारे प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ रही है। नए आयकर विधेयक के अध्ययन पर विशेष बल। हमें सुनिश्चित किया जा रहा है कि हम इस विधेयक की विशेषताओं को गहराई से समझें, ताकि जब हम क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिले तो हम पूर्ण रूप से तैयार रहें और कर प्रशासन में सुगमता और पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकें। हमारी अध्ययन यात्राएं भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहीं। अजंता और एलोरा की गुफाओं का भ्रमण हमें भारत की समृद्ध संस्कृति धरोहर से परिचित कराने वाला अनुभव था। ताडोबा और पंचमढ़ी में प्राकृतिक अवलोकन यात्रा ने हमें पर्यावरण संतुलन एवं सतत विकास के महत्व को समझाया। इसके अतिरिक्त छत्रपति संभाजी नगर में औद्योगिक दौरा और वेस्टर्न कोलफील्ड्स में भ्रमण ने हमें देश के आर्थिक तंत्र की कार्यप्रणाली को करीब से देखने का अवसर दिया। हम सभी प्रशिक्षुओं ने स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत श्रमदान कर स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाया और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी संकल्प लिया। माननीय राष्ट्रपति जी, इस प्रशिक्षण ने हमें एक कर अधिकारी के रूप में केवल कर संग्रह तक सीमित न रखते हुए एक उत्तरदायी और राष्ट्रहित में समर्पित नागरिक बनाने के लिए भी प्रेरित किया है। हमें विश्वास है कि हम अपने अर्जित ज्ञान और अनुभव से न केवल आयकर विभाग बल्कि देश की प्रगति में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। माननीय राष्ट्रपति जी, आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हम संकल्प लेते हैं कि अपने ज्ञान, निष्ठा और ईमानदारी से देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत बनाएंगे और राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहेंगे। इसके उपरांत मैं अपनी सह प्रशिक्षु श्रीमती डिम्पी राजौरा को बुलाना चाहूँगा, जो हमारे अन्य प्रशिक्षण अनुभवों को साझा करेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Honorable President Madam, esteemed dignitaries, and my fellow officer trainees, I, Dimpi Rajora, feel immense pride, humility, and gratitude to stand here in the august presence of the first citizen of our country. As I speak on behalf of the 78th batch of the Indian Revenue Service, Income Tax, I cannot help but reflect on the journey that has brought me here. Madam President, I come from a lower middle class family where aspirations often carry the weight of limited means but limitless determination. And my aspiration could only be realized with the firm belief of my parents in the power of education and perseverance. Madam President, the National Academy of Direct Taxes has been a transformative experience, shaping us into responsible civil servants. Our rigorous academic training covers the pillars of taxation, accountancy, and conduct rules, ensuring that we develop both technical expertise and ethical integrity. The Academy ensures that we stay at the forefront of evolving financial landscapes by keeping us updated on the economic survey, union budget, and the new income tax bill. The Academy also emphasizes constant feedback mechanisms, making learning dynamic, relevant, and holistic. Madam President, we here at the Academy immerse ourselves in the vibrant traditions of the incredible India through our dedicated cultural programs. This allows us to appreciate the unity in our diversity and reinforce the values of inclusivity. Sportsmanship is equally central to our training. The Academy helps in making us physically and mentally resilient by providing us multiple options ranging from yoga to other outdoor and indoor activities. Our achievements in various sports tournaments also reflect our commitment to discipline, perseverance, and teamwork. Madam President, by believing in the motto of our service, Kosh Mulo Dand, meaning revenue is the bedrock of governance, we seek to contribute towards the vision of Viksit Bharat. With these words, on behalf of the 78th batch of the Indian Revenue Service, Income Tax, I extend my heartfelt gratitude to you for your inspiring presence today. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Dear officer trainees of Indian Revenue Service, I am glad to meet you all today.
I congratulate each of you for your success in a tough examination that tests your hard work, perseverance, capability, and determination. Your journey as officers of the prestigious service will be full of immense opportunities and challenges. The job of Indian Revenue Service officers is one of the most important functions for governance and welfare. Taxes are the lifeblood of a vibrant economy. They fund the roads that connect our remotest villages, the schools that educate our children, and the hospitals that treat our citizens. And Indian Revenue Service officers, you will play a pivotal role in ensuring that this essential research is collected in a fair, effective, and transparent manner. India is undergoing a remarkable transformation and is one of the fastest growing major economies. The benefits of this growth are reaching our cities and villages and marginalized sections and every corner of the country. Our infrastructure is growing, digital connectivity is bridging gaps, and the economic opportunities are more accessible than ever before. However, for development to be sustainable and inclusive, resources must be managed with efficiency and fairness, and the citizens should trust the system. This is where your role becomes crucial. You would oversee the process to ensure that everyone contributes according to their lawful capability while being treated with dignity and respect. Dear officer trainees, I appreciate that the direct tax collections have witnessed a robust growth of more than 14% over the previous years. But these numbers respect more than just achieving financial targets. They signify continuous progress of the country in various fields and an enhanced quality of life for the citizens. More opportunity, more importantly, this growth reflects increased voluntary compliance. The Income Tax Department has made significant efforts to achieve this by simplifying process and building public trust and confidence. A few years ago, interacting with tax administration was a different experience. Many processes were manual with extensive paperwork and taxpayers often had to visit offices in person to fulfill their obligations. The changing times, growing expectations, and government initiatives have ushered in a new era of greater efficiency, transparency, and convenience. I am happy to know that the Income Tax Department has evolved from being seen merely as a tax collector to become a facilitator of voluntary compliance, a partner in economic progress, and a symbol of transparent governance. Digital technology, as we know, is at the core of this change. The refunds that took months are now processed in a day. I am glad to know that the Income Tax Department uses advanced data analytics to detect discrepancy with remarkable precision while ensuring that honest taxpayers don't face inconvenience. But you must remember that technology is just a tool and it is not a substitute for human values. Data-driven systems may enhance efficiency, but they can never replace empathy and integrity. Your decisions will have real and long-lasting impact on the lives of the people. Your policies and actions should be aimed towards the development of all, especially the underprivileged and weaker sections. Dear officer trainees, the modern approach of tax collection is centered around voluntary compliance.
This represents a paradigm shift from the previous approach of enforcement, when taxpayers believe that their contributions are valued and they are treated with dignity, they comply naturally as responsible citizens. As young officers, the way you engage with taxpayers, address their concerns, and uphold fairness will reinforce the department's commitment to serve. Your willingness to adapt to changes and embrace continuous learning will be key to your success. You should fulfill your responsibilities with compassion and a sense of justice. I expect you to take up leadership roles in your fields of work so as to ensure best performance of your organization, department, or team in all situations, especially challenging situations. You will be playing an important role in a future of tax administration in the country through an innovative, open-minded, citizen-centric, and tech-driven approach. By committing yourself to building a transparent and effective tax system, you would contribute in building a stronger, more resilient, and inclusive Bharat. I extend my best wishes to each of you for a fulfilling career. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.